हमें ये सारे गुण, ये सारी मुख्य मुख्य शिक्षाएं जो परमात्मा ने अपने दिव्य अवतारों के माध्यम से भेजी हैं, सब जरूरी है सब बच्चों के लिए। कभी भी भेदभाव नहीं करना, कुरान में हो, गीता में हो, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहब में, सबका आदर करना। सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं, क्योंकि परमात्मा एक ही है, धर्म भी एक है, उसका मंजिल भी एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति, और रास्ता भी एक ही है, परमात्मा की शिक्षाओं पर चलना, और कोई रास्ता नहीं है। परमात्मा की शिक्षाएं जो परमात्मा ने दिव्य पुस्तकें भेजी हैं, इनमें जो शिक्षाएं लिखी हैं, ये सारी मानव जाति के लिए हैं। न गीता हिंदुओं के लिए है, न कुरान मुसलमानों के लिए है, न बाइबल ईसाइयों के लिए है, लेकिन ये सारी किताबें परमात्मा की हैं, इन लोगों की लिखी नहीं हैं। और सारी किताबें सारी मानव जाति की धरोहर है। इनमें भेदभाव करना ये अज्ञानता का द्योतक है, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस है। कितना बड़ा ज्ञान है। हिंदू समझते हैं गीता हमारी है, मुसलमान समझते हैं कुरान हमारी है, ईसाई समझते हैं बाइबल हमारी है, सिख समझते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब हमारा है। इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा? क्या ईश्वर इतना निर्दयी है? क्या ईश्वर इतना डिविजिव है? हिंदुओं के लिए कुछ भेजे, मुसलमानों के लिए कुछ और, ईसाइयों के लिए कुछ और भेजा ही नहीं है उसने। बेसिक पर्पज ऑफ ऑल द रिलीजन is to safeguard the interest and promote the unity of the human race and to foster the spirit of love and fellowship amongst men. हर धर्म में एक ही चीज है, मानव मात्र की एकता, आपसी सद्भाव और प्रेम। तो ये प्यारे बच्चों इसमें गांधी जी ने कहा था, if we are to teach the real peace in this world, if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children. प्यारे बच्चों, ये दुनिया में शांति चाहिए, और दुनिया में यदि हमें युद्धों को समाप्त करना है, यानी युद्धों के विरुद्ध युद्ध करना है, तो उसकी शुरुआत बच्चों से करनी होगी। तो बच्चों, आप ही से शुरुआत होनी है विश्व की एकता की। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, तुम एजुकेशन पा रहे हो, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी ताकत आने वाली है। शिक्षा से बड़ी कोई ताकतवर चीज नहीं है दुनिया में। तुम इस शिक्षा के माध्यम से इस दुनिया को बदल सकते हो, लेकिन शिक्षा ऐसी हो जो केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न हो। और भी चीजें, मनुष्य की 3 रियलिटीज हैं, मैन इज द मेटेरियल बीइंग, मैन इज द ह्यूमन बीइंग, मैन इज द डिवाइन बीइंग। मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। तो तीनों प्रकार का संतुलित ज्ञान आवश्यक है। भौतिक ज्ञान चाहिए आपको, अंग्रेजी, भूगोल, गणित का, क्योंकि मानव का जीवन भौतिक है। रोटी कपड़ा कमाने, मकान की व्यवस्था करने के लिए धन चाहिए, और धन के लिए रोटी कमाना पड़ेगा, उसके लिए नौकरी करना पड़ेगी, या कोई व्यवसाय करना पड़ेगा, या किसी प्रोफेशन में जाना होगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो भौतिक ज्ञान तो बहुत आवश्यक है जीवन यापन करने के लिए, और जीवन में खड़े होने के लिए, और समाज सेवा के लिए भी। लेकिन केवल भौतिक ज्ञान काफी नहीं है। ह्यूमन एजुकेशन, मानवीय शिक्षा, क्योंकि व्यक्ति मानव है। पशु योनि और मानव योनि, परमात्मा ने 2 ही तो योनियां बनाई है। हम मानव समाज के सदस्य हैं, तो पूरे मानव समाज के प्रति संवेदनशील बने। ये सब सारी की सृष्टि हमारी है, अपनी है, पराई नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने बनाई। परमात्मा अपना पिता है, पराया नहीं है, परमात्मा का घर है। इस घर को कुछ लोगों ने खराब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, दूरियां पैदा कर दी लोगों की। इसको ठीक करना है। तुम जो एजुकेशन पा रहे हो, इससे तुम दुनिया को बदल सकते हो, अच्छी दुनिया बना सकते हो। और तीसरी चीज, विक्टर ह्यूगो ने कहा था, देयर इज वन थिंग स्ट्रॉन्गर देन ऑल द आर्मी इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। बैलेंस्ड एजुकेशन ऑफ ऑल द 3 रियलिटीज ऑफ लाइफ, दैट इज मटेरियल, ह्यूमन एंड डिवाइन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, इज द आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। भौतिक,
सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार का संतुलित ज्ञान हर बच्चे को होना चाहिए। और ये इतना बड़ा आइडिया है कि आज केवल जो भौतिक ज्ञान दिया जा रहा है, अंग्रेजी, भूगोल, गणित का, ये नाकाफी है। इसके साथ साथ ह्यूमन एजुकेशन और डिवाइन एजुकेशन भी ज़रूरी है। देखो बल्ब है, ये पावर हाउस से जुड़ा तो रोशनी आ गई, यहाँ पे तार टूट गया है ये तो अंधेरा आ गया। इसी तरह एक बालक है, ये बालक प्रार्थना के द्वारा पूरे इस वाङ्मय से जुड़ गया, ईश्वरीय साम्राज्य से। ये परमात्मा का साम्राज्य है जहाँ से सारी किताबें आई हैं, जहाँ से गीता आई 5000 वर्ष पूर्व, त्रिपिटक आई 2500 वर्ष पूर्व, इसी परमात्मा से बाइबल आई 2000 वर्ष पूर्व, इसी परमात्मा से कुरान आई 1400 साल पूर्व, इसी परमात्मा से गुरु ग्रंथ साहब आया 550 वर्ष पूर्व, और इसी परमात्मा से किताब एकदस बाहुल्लाह की आत्मा में बाही पुस्तक आई ये 200 वर्ष पूर्व। तो ये सारा ज्ञान एक दिव्य लोक से आया। यदि पूरे ज्ञान से बच्चा जुड़ गया तो क्या बनेगा? रैशनल, विचारवान, वाइज, बुद्धिमान, गॉडली, गुड, गॉडली, ईश्वरी, गुड, अच्छा इंसान बनेगा, टोटल क्वालिटी पर्सन बन जाएगा, TQP, और टोटल क्वालिटी मैनेजर TMM, like a divine angel, a good human being is a blessing for human society। तो ऐसा बन जाएगा। और कहीं ये तार टूट जाए तब, ये देखिए अब तार टूट गया दिव्य लोक से, पूरे परमात्मा से न जुड़ा, हिंदू बन गया, या तो मुसलमान बन गया, या तो सिख बन गया, या तो ईसाई बन गया, या तो प्रोटेस्टेंट बन गया, या तो कैथोलिक बन गया, या तो निरंकारी बन गया, या तो अकाली बन गया, या तो शिया बन गया, या तो सुन्नी बन गया। तो क्या हो सकता है? ही कैन बिकम इरेशनल, अविचारवान, ही कैन बिकम अनवाइज, अबुद्धिमान, ही कैन बिकम अनगॉडली, अनिश्वरी, ही कैन बिकम बैड, बुरा बन सकता है, ही कैन बिकम टोटली मिसगाइडेड पर्सन, कोई मिसगाइड कर देगा, he can become totally misguided manager, like an animal, a bad human being is a curse for human society, totally unworthy and unacceptable to society। ये मारामारी कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं एक दूसरे पे। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक, प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working
to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. Building bridges between countries and communities, regardless of their cultural differences or political divisions, students of City Montessori School, Lucknow in India travel across the globe as CISV member country and host CISV Village. Apart from being the first of its kind school, a UNESCO award recognition, CMS efforts to promote sustainable agenda of tolerance, unity and peace among children. The 23rd CISV camp is the dawn of a new age or Naya Daur village. At the village, a conducive environment is created wherein children learn the skills of empathy, embracing cross-cultural understanding and mutual respect. On behalf of the world's largest school, we feel it a moral responsibility to represent the interests of the world's 2.5 billion children. CMS offers numerous opportunities in that direction, and this CISV camp being one of the 30 international events hosted or organized by it. The village will be hosted under the able stewardship of the President of CISV India Chapter, Founder Manager of City Montessori School Dr. Jagdish Gandhi, Joint Secretary UP Chapter, Principal of CMS Mahanagar Campus Mrs. Nisha Pandey, Member of the Village Committee Ms. Reena Soti and Camp Director Ms. Iram Fatima. To inaugurate the village, the chief guest Mrs. Aparna Yadav, social activist, graced the occasion. Here are the excerpts from the inaugural ceremony brought to you by the team from CMS Films and Radio Division. Respected Mrs. Aparna Yadav, the chief guest of this function. It's always a pleasure to come and visit the school, and I'm honored and I'm very grateful to Dr. Jagdish Gandhi, the President of CISV India, to invite me as the chief guest for this function. And children from all parts of the world, Sweden, Norway, Japan, USA, UK, Thailand, Brazil, and of course my country, India.
love spread far all over the world for peace and harmony. Good morning, very good morning and Happy New Year to all of you. Now we'll deal with the fire safety measures. A brief explanation about fire. What are the things required to have fire? He is very right. The first thing is oxygen, because without oxygen you cannot have fire. Then the second thing is the fuel which burns, anything which burns. And the third thing is heat. Unless and until you have heat, you cannot have fire. And after that, you can put cold water on it so that the fire is totally down. Now in this is the CO2 type fire extinguisher. In this fire extinguisher, even the same case is there. But if there is a big fire, these extinguishers won't help. Then you need fire hydrant system. To douse this, we have the hydrant system. This is a branch pipe. Now they have opened it. To lead the world into a new era of unity and peace, striving for a safe future of 2.5 billion children of the world and generations yet to be born, humanity has to do its best for the children. Children's right to a safe future is human rights of children. Thus, City Montessori School decided to approach the Chief Justices of the world by way of organizing Chief Justices Conference
every year since the turn of this century, soliciting their support in favor of the children's cause. Need of the hour is the emergence of a new international economic and political order. In the International Conference of Chief Justices of the World, attended the state reception organized by the gracious Home Minister of India, Honorable Shri Rajnath Singh, at the NDMC Community Centre, Sansad Marg, New Delhi. I am happy to note that CMS has been organizing International Conference of Chief Justices of the World, which is aimed at ensuring a peaceful and prosperous future of children in specific and the world in general. It also provides an opportunity to the children to meet and learn about the problems of the world and their solutions from these great personalities. Team from City Montessori School World Unity Education Department escorted the august guests to one of the 7 wonders of the world, the Taj Mahal. Visit to Rajghat, paying homage to the father of the nation, the great leader of our times. The guests interacted with the members of the press at the Lee Meridian in New Delhi. The dignitaries of the 17th International Conference of Chief Justices of the World met at the dinner reception hosted by the International Bench and Bar Association. Welcome to the modern architectural marvel of India, the Baha'i Temple. Welcome, honorable dignitaries, Prime Minister of the Republic of Guyana, His Excellency Mr. Moses Weerasamy Nagamutu, Prime Minister of the Republic of Mauritius, His Excellency Mr. Anirudh Jagannath, former President of the Republic of South Africa, His Excellency Mr. Kgalema Motlanthe, President of the Republic of Mauritius, His Excellency Mr. Kasamuddin, President of the Republic of Croatia, His Excellency Mr. Stejepan Mezic, President of the Republic of Sudan, His Excellency Mr. Abdul Rahman Swar Al-Dahab, Governor General of the Republic of Tuvalu, His Excellency Sir Iakobati Italeli, 300 Chief Justices and judges from 63 countries are participating in this conference at Lucknow. We discuss the present world scenario wherein it is necessary to strengthen the United Nations organization by suitably amending its charter so as to make it a more effective body for preventing wars, resolving international disputes, countering terrorism, conservation and protection of environment, ensuring nuclear disarmament, and evolving enforceable world law to ensure world peace and prosperity and a safe future for children. To safeguard the future, the only way left is to follow the dictates of our thinkers and of our great leaders, what they said. Pandit Nehru said, either the world will unite or it will perish. Chief guest, Governor of Uttar Pradesh, the Honorable Shri Ram Naik, arrived for the inaugural ceremony. The business of the first day of the conference began with the World Unity March around CMS World Unity Convention Center Auditorium, where they were joined by the chief guest of the inaugural session, Honorable Mr. Ravi Shankar Prasad, Union Minister for Law and Justice, Government of India. Let there be peace in the world, greater good for the children of the world, more commitment for a prosperous world where there is amity, understanding and peace. Please ring the bell. On this occasion, the key to the city of Lucknow on behalf of citizens of Lucknow was presented to Honorable Mr. Justice Vincent A. De Gaetano, Chief Justice Emeritus, Malta, Judge, European Court of Human Rights, Council of Europe, France. In the evening, dinner and reception of delegates was hosted by the Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Akhilesh Yadav. I can say I am impressed to see so many former heads of states, chief justices and judges of apex courts present here to reflect in a judiciary perspective
on the issue of world peace and security so that we can leave the best possible legacy to the more than 2.5 billion children of the world and future generations. I remember when at the age of 14, I joined the struggle for Guyana's independence, and then spent almost 3 decades after that to fight for majority rule and for the restoration of democracy in Guyana through fair and free elections. In the presence of the chief guest, His Excellency Sir Iacoba T. Italeli, Governor General of the Republic of Tuvalu. A recent UN report draws on data from 190 countries, found that about 2/3 of children worldwide between age 2 and 14, almost 1 billion children, are subjected to physical punishment by their caregivers on a regular basis. The Speaker of the Uttar Pradesh Legislative Assembly, Shri Mata Prasad Pandey, hosted the reception of delegates, followed by the dinner. मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस उत्तर प्रदेश की धरती पर, और अपनी तरफ से तो करता हूँ, अपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा की तरफ से भी आए हुए सभी अतिथियों का, गणमान्य राष्ट्राध्यक्षों का, सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। Realizing the complex situation of the world, we must follow the path of unity and constitute a world parliament. Legal luminaries then presented the resolution in the final plenary session in the main auditorium, presided over by Honorable Mr. Justice A.P. Mishra, former Judge, Supreme Court of India. Moving of the draft resolution by Mr. Ratan C. Gupta, General Secretary of the conference. And now, ladies and gentlemen, passing of the resolution after consideration and vote. "54 years ago, I started this school on 1st of July 1959. The kind of education that is being given to the children is only material. But I realize the man has 3 realities of life. Man is a material being, man is a human being, man is a divine being. He needs a balanced education of all the 3 realities of life. Therefore, I started this school with a mission to impart a balanced education to the children. Mahatma Gandhi said, "I will not follow the beaten track. I follow this. I will create my own path." So I have created my own path to bring about a change through education, change the mindset of the children. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।